Welcome back, viewers. More than 600 lawyers, including senior advocate Harish Salve and Bar Council of India chairperson Manan Kumar Mishra, have written to the Chief Justice of India alleging that a vested interest group is trying to put pressure on the judiciary and to defame the courts, especially in cases of corruption involving politicians. The lawyers, drawn from across the country, targeted a section of lawyers without naming them and alleged that they defend politicians by day and then try to influence judges through the media at night. The letter alleged that a certain interest group creates false narratives aimed at influencing courts and embarrassing them for political gains. The lawyer said that Chief Justice of India Chandrachud's leadership is crucial in these tough times and that the apex court should stand strong, adding that it is not the time to maintain a dignified silence. While one is yet to hear of a response from the Chief Justice of India taking note of allegations, Prime Minister Narendra Modi said that it is a vintage Congress culture to browbeat and bully others. At the Times Now summit, union ministers also echoed the Prime Minister's sentiments. प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश करती है लोगों की, और खास करके ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि बहुत से सीनियर लॉयर्स ने भी एक पत्र लिखा है और कहा है कि जुडिशरी को दबाया जा रहा है, जुडिशरी को डराया जा रहा है। मैं इसका पर्सपेक्टिव समझना चाहती हूँ। देखिए, जब चुनावों में हार दिखती है तो कांग्रेस ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती, पहले कह देती है ईवीएम से हारेंगे, लेकिन जब जीते तब कभी नहीं कहते ईवीएम ठीक थी। अब जिस पार्टी ने 60 साल सरकार देश में चलाई हो, वो सभी संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। After all, these are all constitutional bodies. If they don't have trust, and the party who has been in power for 60 years, there's raises a lot of question mark on the timing and also on the allegations they have made. जुडिशरी के ऊपर, अरे वो पार्टी कह रही है जहां पर इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो किया वो देश भूला नहीं है। जुडिशरी के सामने जो इंदिरा गांधी जी ने आवाज दबाने का काम किया, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक बार फिर कांग्रेस इन संवैधानिक संस्थाओं का आवाज दबाने का काम कर रही है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, और जुडिशरी के खिलाफ जो बार बार बयान ये राजनीतिक दल दे रहे हैं, ये निंदनीय है, अशोभनीय है। इनको माफी भी मांगनी चाहिए। और हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम बहुत बढ़िया है। और एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप जब मोदी जी सीएम थे, कांग्रेस ने फर्जी केस उनके ऊपर किए। नाविका जी, उस समय भी नरेंद्र मोदी जी जांच एजेंसियों के सामने जाकर पेश हुए, कोर्ट केसेस में लड़ा। उन्होंने तब भी कहा था मुझे जांच एजेंसियों पर भी भरोसा है, मुझे देश के न्यायालयों पर भी भरोसा है। ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर पूरी कांग्रेस की सरकार उस समय लगी थी, उसके बावजूद उनका विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में पूरा था। लेकिन जो लोग स्वयं कभी राजनीति में 60 साल रहे, सत्ता में रहे, आज उनका विश्वास क्यों नहीं? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब राजनीतिक लड़ाई हार गए, अभी हारे कहां, चुनाव कहां हुए हैं? अरे एक के बाद दूसरे इलेक्शन में हार रहे हैं। तो इस चुनाव को आप मान रहे हैं कि आप जीत चुके हैं? देखिए, मैं जनता की आवाज को सुनता हूं। आज जब मैं दक्षिण भारत जाता हूं, उत्तर भारत जाता हूं, कल मैं जम्मू में भी था, देश के किसी कोने में जाता हूं, तो लोग कहते हैं माय चॉइस मोदी। Let me ask you, today the Prime Minister has also tweeted, some eminent lawyers have also written a letter. The question that is being asked, and the Prime Minister has tweeted about the pressure that is being put by the Congress party on the judiciary. I want to get a perspective on what is the Prime Minister hinting at, and where do you think the pressure is being put on the judiciary? Is it just because even the Congress party has come out and said that after the electoral bonds issue, which has gone against your government, this is a deliberate psychological warfare that has been launched on the judiciary? तो ये नया है क्या कांग्रेस के लिए? कांग्रेस का पूरा इतिहास इस चीज से भरा हुआ है। They killed the constitution, they killed so many institutions, they put so much pressure on the judiciary. I'm sure you would all remember, Congress used to say
कांग्रेस नीड्स अ कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी का क्या मतलब है भाई? अब ये बताओ, कांग्रेस का पीरियड था जिस पीरियड में जुडिशरी में जो व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए था उसको नहीं बना के किसी और को बनाया। व्हाई? दैट्स व्हाट कांग्रेस की जीन्स ऐसी है, कांग्रेस का कल्चर ऐसा है। कांग्रेस में ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में इंडिपेंडेंस नहीं रहनी चाहिए। अगर आप अभी मिस नीरजा चौधरी ने अभी एक बुक लिखी है प्राइम मिनिस्टर्स पे, उस बुक को आप पढ़ो, पहले ही चैप्टर में इतनी स्ट्रॉन्ग सामने आता है कि किस तरह से कांग्रेस के गांधी परिवार ने क्लियर डिस्कशंस होते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे सबवर्ट किया जाए। आई मीन दैट्स द वे कांग्रेस माइंडसेट इज। तो आज वो फिर प्रेशर डाल रहे हैं, ये उनका काम है, ये उनका नेचर है। So we just heard two ministers speak about it, but what did the 600 or so lawyers that signed the letter say? What were the charges? The first charge is that this vested group put pressure and influence on the judicial process. That is the first charge that the 600 lawyers have made. The second is they defame the courts based on political agendas. So that is the second charge that is made by the lawyers. The third charge is that the tactics most obvious in political cases is where you see this. That is where their tactics are applied the most. The interest groups create false narrative. That is also one of the charges that has been leveled by the group of lawyers that have written this letter. And the fifth charge is that the narratives are made to sway the court's decisions. So these are some of the charges that the group of 600 or so lawyers that have written a letter to the Chief Justice of India have leveled. Let's also take a look at what the Prime Minister has said on this letter. He says, to browbeat and bully others is a vintage Congress culture. So the Prime Minister had a clear takeaway from this. He also said 5 decades ago, the Congress called for a committed judiciary. So he's remarking upon something that happened over 50 years ago. Once again, he says the Congress shamelessly wants commitment from others. So this is also a charge that the Prime Minister is inferring from this letter. He says the Congress desists from any commitment towards the nation. And so all in all, the Prime Minister has also said that the Congress desists from any commitment to the nation. And he says no wonder 140 crore Indians are rejecting the Congress party. So the Prime Minister has taken the letter written by 600 lawyers, and he has also highlighted and alleged, and he has raised the Congress's name in this entire matter as well. It's a big development, and a large group of lawyers that has signed this letter, led very notably by senior advocate Harish Salve and also the Chief of the Bar Council of India, Manan Kumar Mishra. On top of that, the Prime Minister and the various Council of Ministers have also added to the mix. But the Prime Minister's attack on the Congress came even as the letter itself did not make any direct mentions. The Congress hit back at the Prime Minister, accusing him of hypocrisy. Congress President Mallikarjun Kharge accused PM Modi of bullying every institution into submission and hurting the constitution. Kharge reminded of the 4 senior-most Supreme Court judges holding a press conference in 2018 alleging destruction of democracy under the NDA regime. Jairam Ramesh meanwhile said the PM's brazenness in orchestrating and coordinating an attack on the judiciary in the name of defending the judiciary is the height of hypocrisy. INDIA allies also echoed similar sentiments. सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है वो खुद ही जानते कहाँ से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ साल पहले जस्टिसेस ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है। और ये लॉयर्स जो बहुत सीनियर लॉयर्स हैं, लास्ट टाइम हमने इनको सुनाई दिया या दिखाई दिया वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के इश्यू पर, जब वो खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट पर पूरा दबाव डाल रहे थे, और आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी नहीं, इसलिए अभी वो उल्टा करने की प्रयास कर रहे हैं। So that